गो लाइव हो गया। सिर्फ पट्टी जाता है जाना भाई जल्दी जाओ उसमें कूपन कोड है सुरेश भाई ओ सुरेश भाई கொஞ்சம் பண்ணலாம்ல என்ன सुरेश भाई இப்படி சொல்றீங்க अरे हर्ष इधर आना आईडी दे फटाफट दे 13 80 और ये नीचे क्लब आईडी सेंड करना रहता है सेंड कर कुछ भी कर जल्दी बता हम लोग का है ना बैटिंग Avengers Tsl क्लब आईडी 34 34 3494 947 34947 subscribe to Jfsc अरे यार Jfsc get link copy link हाँ फोन किया था एक आधा घंटा पहले बोल दिया था उसको 8 बजे लेके आने के लिए थोड़ा चार्ज करके बैटिंग ही है ना आराम से बनेगा लास्ट ऐसा भी सब्स्टिट्यूट है आज सब्स्टिट्यूट है हाँ तो बैटिंग वाले वैसा कुछ नहीं पता नहीं क्या सब्स्टिट्यूट वाला ही का वो एक रहता है एक रहता है अभी इन लोग मेरे को मैंने फील्डिंग सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करता है ना ग्राउंड बिट मस्ती बना है मेरे को कमेंट्री चाहिए तो बुला लो अच्छा मैं मेरे को बोलता था मैं बोलूंगा वो पहले वो अरमान करता था हाँ डाल दिया क्या है टॉस मिसफिट्स बॉलिंग हाँ मिसफिट्स वन द टॉस ये बड़ा लेट है यार 8:15 बजा दिया है जो कब खत्म होगा अरे भाई चांदू ये
Hello all, good evening. We welcome you to another match in the TSL, the Super League, being played at the Fatima Cricket Ground. This is your commentator Shalin Gupta, welcoming all our viewers who have been watching this TSL since almost a couple of months now. And we are into a wonderful match again today, wherein Misfits are locking horns against the Avengers. And the news from the centre is that the Misfits have won the toss. They've elected to field first. Avengers would be batting first. And we've got the opening batsman for Avengers at the crease. The opening bowler for Misfits is Karan Ruya. Coming into bowl. His first over. He's the captain of the team as well. And here we go. The first delivery to be bowled by Karan. On strike is Deep Ajmera. That's a wonderful start by the opening bowler, who happens to be the captain of the team as well. A brilliant line indeed. Perfect length. And right on the money from the first ball itself. So wonderful start by the opening bowler, Pajmera, giving who happens to be the captain of the team as well. Rohit Iyer is his partner. He's a brilliant line indeed. Perfect length. Karan coming to bowl his next delivery. Bowling right arm over the wicket. That's a good delivery again. Played well towards the cover point. There is perfect length. Karan coming to bowl his next delivery. Ashir stopping it well. Perfect length. Karan coming to bowl his next delivery. To come on the board. Still, two deliveries have been bowled. That's a good start by Karan. The wicket. That's a good delivery again. Played well towards the cover point. There is the TSL. This wonderful tournament being played at the Fatima Cricket Ground. Organized beautifully and wonderfully well by the Jfsc Tsl Sports Club. Karan to deep again. That's a wonderful line, and just have a look at the length as well. Impeccable length by the JF. Not at all easy to negotiate that with the new ball, and he's playing well there deep. Karan to deep again. That's a wonderful line, and just have a look at the length as well. The very first impeccable length. Karan with his next delivery. That's a wonderful cut shot. Will be the first boundary, it seems. No cover out there. Brilliantly played between the backward point and the point fielder. What a shot that was. That's a wonderful cut shot. Will be the first boundary, it seems. No cover out there. Brilliantly played between was slightly the backward point and the point fielder. What a shot that was. Did not miss that. Just have a look. That's a wonderful cut shot. Will be the first boundary, it seems. No cover out there. Brilliantly played between a wonderful cricketing shot. Backward point and the point fielder. What a shot that was. This is really good batting. And the first runs on the board, courtesy a wonderful boundary by Deep Ajmera. Karan coming into bowler's next delivery. Another good shot this time in the gap again. Through the covers. Could be the second boundary on the consecutive deliveries. And that is a boundary again. Brilliantly played by the batsman. Deep Ajmera is on fire. He's playing it really well there. It was a wonderful shot played by the batsman. Pitched slightly up and asking him to drive, and up to the task here, Deep. Full boundary by Deep Ajmera. Karan coming into bowler's next delivery. Just have a look at that. Another good shot this time in the gap again. Through the covers. Could be the second boundary on the consecutive deliveries, and that is a boundary again. Brilliantly played by the batsman. So 8. Deep Ajmera is on fire. All of a sudden it really well there. The fourth and fifth delivery of this first over. Wonderful shot played by the batsman. Pitched slightly up and asking him to drive, and coming to bowl his last delivery of the first over. The task here, Deep. Full boundary by Deep Ajmera. Probably will come back for the second. No. Bowler's next delivery. Just have a look at that. Another good shot this time in the gap again. Through the covers. Could be the second boundary on this. That's the end of the consecutive deliveries, and that is a boundary again. Brilliantly played by the batsman. 8. Deep Ajmera is on fire. All of a sudden it really well there.
Rohit on strike. Beg your pardon, Deep on strike again. As he took the single on the last delivery of the previous over. And Ram is the new bowler. He's sharing the new ball with Karan Ruya. 9 without loss. That's a good start by the Avengers after they lost the toss and were invited to bat first. And we'll just bring to the notice of all our viewers and the ones who are watching this match live on the YouTube channel of the Jfsc that Hindi commentary will also be presented in the TSL matches. That's a good start by Ram and a quick single taken, transfer for run out here. But he's completed the run really well. Rohit there. He was running to the danger end and does really well. He will face his first delivery. Ram will be bowling his second delivery of his first over. Just the start of his spell. That's a good delivery. Pitching in line and a wonderful length as well. Played well by Rohit. This was his first delivery. Coming to bowler's next, Ram. Oh, and this time he plays it in the air. Just short of the short leg. The square leg fielder. A single taken quickly there. So that's a good delivery by Ram. 11 without loss and Rohit off the mark. With a cheeky shot. Not the one that he would have liked to hit to open his account. But nonetheless gets the first run in his innings. Ram coming to bowl to Deep Ajmera now, who's on strike. Oh, and this time probably he was not ready for the ball. He'll have to bowl that again. Ram going back to his run up. So that's a good start by Avengers after they were put into bat first. The Misfits winning the toss and electing to field first in this TSL match, the Super League being played at the Fatima Cricket Ground. A wonderful tournament that was a super hit tournament last year. Ram. Oh, and that's a wonderful delivery, appealing for an LBW, but probably drifting down the leg side, and the umpire not interested there. Just a dot delivery. Ram with his next delivery. Oh, and that is just outside the off stump, trying to hit that. Going for a slash but not succeeding. Very close to the outside edge. And that was a close call there. But he is a free-flowing batsman. Deep Ajmera doesn't hesitate in going for his shots. And this time also he tried to just cut that. Could not succeed though. Ram bowling a good line. Bringing the ball back into the batsman as well, apart from going away from the batsman. Oh, and this time in the air. Could have been the first wicket. And that's the end of a good over by Ram. 12 without loss after 2 overs. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
And you've got the captain Karan Roya coming into bowl his next over. That's a wonderful piece of bowling, and he starts off really well, just like the start he gave in the last over. A perfect line and impeccable length. Deep Ajmera giving the due respect once again to the bowler, defending it nicely. In the air and in the gap as well. Could be another boundary. This guy is on fire. Playing free flowing shots. What a wonderful shot that was. Playing it brilliantly through the covers, and wonderful execution by the batsman. In the air and in the gap as well. Could be another boundary. This guy is on fire. Playing free flowing shots. Slightly uppish, but doesn't matter if it's in the gap. That was a good shot. Just have a look at that replay. In the air and in the gap as well. Could be another boundary. This guy is on fire. Playing free flowing shots. Again, that's a good comeback by. What a wonderful shot that was taken. This is really good piece of work there by both these players, especially Deep Ajmera, who's not only playing it brilliantly through the covers and to rotate strike as well. And that's the way you have to build your innings. Execution by an opening batsman. The batsman have to hit the loose deliveries out of the park. In the air and in the gap as well. Could be another boundary. This guy is on fire. Playing free flowing shots. Slightly uppish by Deep Ajmera. Doesn't matter if raised to 15 of just 12 deliveries. This is a really good start by the opener. Rohit Iyer has played only 2 deliveries till now and has scored. In the air and in the gap as well. Could be another boundary. This guy is on fire. Playing free flowing shots. Extra given. That's a good comeback by. What a wonderful shot that was taken. This is really good piece of work there by both these players, especially Deep Ajmera, who's not only playing it brilliantly through the covers and to rotate strike as well. And that's the way you have to build your innings. Execution by an opening batsman. The batsman have to hit the loose. Coming to bowl his next delivery. Rohit on strike. In the air, played brilliantly, flicked towards the deep square leg for a boundary. What a shot, and this is his first boundary, but played it in style, really. Wonderfully played by Rohit, and no chance for any fielder. There was no fielder out there. That is some shot played by Rohit. Wonderful execution. Pitched it up on his pads and just whipped it towards the Rohit on strike. Square leg boundary. Just in the air, played brilliantly, flicked in the air towards the deep square leg for a boundary. What a shot, and this is his first boundary, but played it in style, really. Rohit also coming wonderfully played by Rohit, and no chance for any fielder. There was no fielder out there. Scored by him. The score has raised to 22 without loss. And this 2.4. Karan Roya being taken away for a lot of runs in his first 2 overs. Execution. In the air once again, and could be another single. There would be a sweeper there. They've just changed the field, given a sweeper. Square leg boundary. Just in the air, played brilliantly, flicked in the air towards the deep square leg for a boundary. What a shot, and this is his first boundary, but played it in style, really. Rohit also coming wonderfully played by Rohit, and no chance for any fielder. There was no. In the air, this time could be the first wicket, and that is caught easily by the covers fielder, and he's shocked there, stunned. Doesn't want to go back to the pavilion, but he will have to. This is the first wicket down for the Avengers, and this ball was slightly slower through the air, it seemed. We'll just have a look at the replay. Oh, in the air, this time could be the first wicket, and that is caught easily by the covers fielder, and he's shocked there, stunned. Doesn't want to go back to the pavilion for his team, the captain, but he will have to. This is the first wicket down from the front after being hit for the Avengers, and this ball was slightly. Wicket for Avengers is down. 23 for 1 they are now. It seemed. We'll just have a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. This is really good bowling by Karan Roya. Not
Not hit the easily by the covers fielder, and he's shot there, stunned. Doesn't want to go back to the pavilion. The captain, he will have to. Comes into the first wicket down from the front after being. We're back live. Amol Saraf is the new batsman. A brilliant batsman in his own regard. Ram Mane starts off with a wide. This is his second over, not a good start at all. So a couple of extras given through wides by the Misfits. 3 overs, 24 for 1 is the score now. And it's a good run rate that they've maintained, 8 runs per over. Oh, and that's a wonderful comeback by the bowler. That was a quick delivery outside the off stump, trying to cut that, but that was really quick and probably was not ready for that pace. Amol. And a dot delivery. That's a good comeback by the pace bowler. It's Rohit Iyer who's on strike. I beg your pardon. Amol Saraf is at the non-striker's end. So Rohit needs to be careful here. They've just lost a wicket. Oh, again in the air. And this length probably is the perfect length to bowl. The ball seems to be stopping a bit when it pitches on this length. That was in the air as well. Rohit would have had his heart in his mouth, but no harm eventually. Oh, and what a shot that is, a brilliant pull shot. There's no fielder out there, hitting it brilliantly towards the deep backward square leg for a boundary. That is some really good execution by the batsman. Rohit Iyer is on fire. Oh, and what a shot that is, a brilliant pull shot. There's no fielder out there, hitting it brilliantly towards the deep backward square leg for a boundary. That is some really good execution by a high quality shot hit by Rohit Iyer. The batsman Rohit Iyer is on fire. 7 deliveries. So he was the one who was silent when Deep Ajmera was hitting boundaries, and now he's taking. Oh, and what a shot that is, a brilliant pull shot. There's no fielder out there, hitting it brilliantly towards the deep backward square leg for a boundary. That is some really good execution by a high quality shot hit by Rohit Iyer. The batsman Rohit Iyer is on fire. 7 deliveries. Be slightly aggressive. He was the one who was silent when Deep Ajmera was hitting boundaries, and now he's taking. Oh, and what a shot that is, a brilliant pull shot. Oh, and that's a wonderful cut shot, hitting it brilliantly towards the deep backward square leg for a boundary, but that's a boundary. That is some really good execution by a shot played over point. Shot hit by Rohit Iyer. The batsman shot that was on fire. 7 hitting boundaries at will now. Be slightly aggressive. He was the one who was silent when execution. Deep Ajmera was hitting boundaries, shot now. Oh, and what a shot that is, a brilliant pull shot. Oh, and that's a wonderful cut shot, hitting it brilliantly towards the deep backward square leg for a boundary, but that's a boundary. That is some really good execution by a shot played over point. Shot by Rohit Iyer. The batsman shot that was on fire. 7 hitting boundaries at will now. Some really good bowling and slightly aggressive. He was the one who was silent when execution. Deep Ajmera was hitting boundaries, shot now. Oh, and what a shot that is, a brilliant pull shot. Oh, and that's a wonderful cut shot, hitting it brilliantly towards the deep backward square leg for a boundary, but that's a good shot this time. Could be another boundary. There's no fielder out there. Will be a 4 again. He's on fire, this guy. 3 boundaries scored now. In this over, that's the end of an expensive over. Oh, and what a shot that is, a brilliant pull shot. Oh, and that's a wonderful cut shot, hitting it brilliantly towards the deep backward square leg for a boundary, but that's a good shot this time. Could be another boundary. There's no fielder out there. Will be a 4 again. He's on fire, this guy. 3 boundaries scored now. In this over, that's the end of an expensive over. Oh, and what a shot.
Karan Roya coming into bowl his third over. That's a good start again. He starts off really well. The first delivery is what is very important for any bowler. He's bang on target almost every time he bowls the first delivery of an over. That's the hallmark of a really good bowler who knows where to bowl. Doesn't allow the batsman to free his arms right from the first ball. Amol Saraf is on strike. That was his first delivery. Oh, and this time he plays it well. In the gap as well. Brilliantly plays and will be a boundary. Could have been a better effort though on the field. What a brilliant shot played by Amol Saraf to open his account. That was wonderfully placed and Karan Roya not happy at all. Ball, Amol Saraf is on strike. I kind of agree with him. That was his first delivery. Just have a look at that replay. Oh, and this time he plays it well. In the gap as well. Brilliantly plays and will be a boundary. Could have been a better effort though to open his on the field. First boundary. What a brilliant shot played by Amol Saraf to open his account. That was wonderfully placed and by Karan Roya not happy at all. Batsman. Ball, Amol Saraf is on strike. I kind of agree with him. That was his first delivery. Just have a look at that replay. Oh, and this time close to the off stump, trying to cut that. The length not allowing that cut shot. That was a good delivery and good comeback by Karan Roya. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. Pitching it into the stumps, and that is what is required. He's gone for some runs, Karan Roya, today, but he's taken the all-important wicket of Deep Ajmera, and that's what matters. This format will definitely not be friendly to the bowlers, but if you can take some wickets up front, can help your team with your contribution. And look at Rohit Iyer's strike rate, 180, 18 of just 10 deliveries. He's played some wonderful shots in the last over to Ram. That's a good shot, and what a stop that could have been. Could have been one of the best catches also. No run taken though. That was played straight back to the bowler, and for a moment it looked your contribution. Look at Rohit Iyer's strike rate, 180, 18 of just 10 deliveries. He's played some wonderful shots in the last over to Ram. That's a good shot, and what a one of the best catches. Stop that could have been. Could have been one of the best catches also. No run taken though. The short delivery played well, straight to the point fielder. That was played straight back to the bowler, and a very good over bowled really quickly as well. Karan Roya, end of the fifth over. Look at Rohit Iyer's 40 for 1 case. Captain the job for his team. Bowling 3 from overs up front till now. Over to Ram. And we'll take a that's a good shot, and what a Hindi commentary now. Stop that could have been. Could have been one. स्वागत करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों श्रोताओं का इस TSL मुकाबले में। द सुपर लीग का एक बेहतरीन मुकाबला हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर, और मैं आपका कमेंटेटर शालीन गुप्ता एक बार फिर से आ गया हूं आपके समक्ष हिंदी कमेंट्री प्रस्तुत करने। 40 रन पर 1 विकेट स्कोर है 5 ओवरों के बाद, और रोहित निम्बालकर को गेंद थमाई गई है उनका पहला ओवर। स्ट्राइक पर हैं रोहित अय्यर, तो रोहित डालेंगे रोहित को। बाएं हत्था गेंदबाज हैं और बढ़िया शुरुआत। रोहित अय्यर ज़बरदस्त फॉर्म में 18 पर आ गए 11 गेंदों के बाद।
अगली गेंद, अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन लिया तेजी से। क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पर, लेकिन रन हो जाएगा आसानी से। और ये हवा में और बच गए। अमोल सराफ, बहुत अच्छा शॉट तो नहीं कहेंगे इसे, यहाँ पर भाग्यशाली साबित हुए कि स्क्वायर लेग के हाथ में नहीं गई ये गेंद, खेलना चाहते थे कहीं और ये वाइड गेंद होनी चाहिए, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद। जी हाँ, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है और वाइड थी भी है। ये देखिए पिछली गेंद पर हवा में और बच गए। फुल शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन क्षेत्ररक्षक के बहुत पास थी गेंद। क्या अच्छा शॉट तो नहीं कहेंगे इसे, थोड़ी सी भी यहाँ पर भाग्यशाली साबित अच्छी तरह लगी होती, स्क्वायर लेग के हाथ में नहीं गई। भाग्यशाली रहे कि बल्ले पे अच्छी तरह लगी नहीं, उसके बाद वाइड डाल दी है रोहित ने, तो थोड़ा दबाव जो बनाया था वो हट जाता है बल्लेबाज के ऊपर से। यहाँ पर लाइन जो है वो, और ये वाइड गेंद होनी चाहिए, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद। जी हाँ, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है, की तरफ नहीं ले जानी थी भी है, के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा गेंदबाज को। पिछली गेंद पर हवा में और बच गए। फुल शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन अगली गेंद क्षेत्ररक्षक के राइट चेंज कर लिया और बेहतरीन गेंदबाजी। शॉट तो नहीं कहेंगे इसे, बीडब्ल्यू की अपील भाग्यशाली साबित लगी होती, लेग स्टंप की तरफ जा रही थी। अंपायर रहे कि बल्ले पे अच्छी तरह लगी नहीं, उसके बाद वाइड डाल दी है रोहित ने, तो तरफ जा रही दबाव जो बनाया था जाती और बढ़िया निर्णय यहाँ अंपायर हट जाता है बल्लेबाज। बेहतरीन अंपायर है, हमने पहले भी यहाँ पर लाइन के बारे में जिक्र किया है, जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं। और ये वाइड गेंद होनी चाहिए, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद। ये धनी है, जी हाँ, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है ताकि ये खास बात थी भी, समय लेते हैं और के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। खराब गेंद, बढ़िया शॉट, और क्या ये चौका होगा देखना है। जी हाँ, 4 रन सीमा रेखा के पार, फुल टॉस गेंद और उसे उसकी जगह पर पहुंचाया और बेहतरीन गेंदबाजी। हार कहेंगे इसे, करना चाहिए था की अपील। अच्छी गेंद है, बढ़िया निर्णय यहाँ अंपायर हट जाता है बल्लेबाज। बेहतरीन अंपायर है, हमने पहले भी यहाँ पर लाइन के बारे में जिक्र किया, बाहर फुल टॉस गेंद है, मौका दिया। वाइड गेंद होनी चाहिए, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद का, ये धनी है, खराब गेंदबाजी का अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है ताकि ये खास बात थी भी, समय लेते हैं और ये देखिए के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। बहुत खराब गेंद, आसानी से चौके, बढ़िया शॉट, और क्या ये चौका होगा देखना है। जी हाँ, 4 रन सीमा रेखा के पार, फुल टॉस गेंद शॉट, और इस बार गैप में खिलाई, जगह पर पहुंचा, ये भी चौका होगा। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी है, नहीं कहेंगे इसे, 4 रन। थर्डमैन के क्षेत्ररक्षक ने कोशिश तो की, अच्छी गेंद, 4 रन गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन के बारे बल्लेबाजी के बाहर फुल टॉस गेंद, निशानी है कि खराब गेंद होनी चाहिए, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, ये धनी है, खराब गेंदबाजी है। शॉट, और क्या ये चौका होगा देखना है। जी हाँ, 4 रन सीमा रेखा के पार, फुल टॉस गेंद शॉट, और इस बार गैप के बाहर फुल टॉस गेंद वाइड करार दिया है ताकि ये खास बात थी भी, समय लेते हैं और ये देखिए के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। बहुत खराब गेंद, आसानी से चौके, बढ़िया शॉट, और क्या ये चौका होगा देखना है। जी हाँ, 4 रन सीमा रेखा के पार, फुल टॉस गेंद शॉट, और इस बार गैप में खिलाई, जगह पर पहुंचा, ये भी चौका होगा। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी है, नहीं कहेंगे इसे, 4 रन। थर्डमैन के क्षेत्ररक्षक ने कोशिश तो की, अच्छी गेंद, 4 रन कर रहे हैं। लाइन के बारे बल्लेबाजी के बाहर फुल टॉस गेंद, निशानी है कि खराब गेंद होनी चाहिए, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, ये धनी है, खराब गेंदबाजी है। शॉट, और क्या ये चौका होगा देखना है। जी हाँ, 4 रन सीमा रेखा के पार, फुल टॉस गेंद शॉट, और इस बार गैप के बाहर फुल टॉस गेंद और खुश होंगे अपने दल को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करे जाने पर। जिस तरह का स्कोर अभी बना लिया है एवेंजर्स ने, टॉस हारा था एवेंजर्स ने और मिसफिट्स ने गेंदबाजी का फैसला किया था।
करण रोहिया आ रहे हैं चौथा ओवर लेकर। बढ़िया शुरुआत, एक भी रन नहीं और सीधा खेला। दूसरे छोर के विकेट पे जाकर लगा ये गेंद। कप्तान की ये अच्छी रणनीति है, अपने आप को 4 ओवर डलवा रहे हैं। ये चौथा ओवर उनका, कोशिश करेंगे एक और विकेट लेने की। यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत लेकिन एवेंजर्स की तारीफ करनी होगी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 6 ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार किया है। और ये हवा में खेला हुआ शॉट और ये आउट। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे कि विकेट लेना चाहेंगे यहां पर, और सफल भी हो गए हैं कप्तान करण रोहिया। बेहतरीन गेंदबाजी और रोहित अय्यर का विकेट ले लिया है। वाह, लॉन्ग ऑफ पर सदानंद पुजारी ने एक आसान सा कैच लपका, लेकिन यहां पर पूरा श्रेय दिया जाएगा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कप्तान को करण रोहिया, जो कि गेंदबाज भी हैं, पार किया है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी आप देख सकते हैं, तारीफ करनी होगी इनकी। यहां पर आपको रिप्ले दिखाएंगे, ये देखिए ऊपर की गेंद, बड़ा शॉट खेला और ये हवा में खेला हुआ शॉट मौजूद था तो नहीं खेलना चाहिए था। और ये आउट। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे कि विकेट लेना चाहेंगे यहां पर, आसान सी बात है इस तरह के कैचेस लेना। सफल भी हो गए हैं कप्तान करण रोहिया। बेहतरीन गेंदबाजी और रोहित अय्यर का विकेट ले लिया है। वाह, लॉन्ग ऑफ पर सदानंद पुजारी ने क्षेत्र रक्षक हैं और आसान सा कैच लपका, लेकिन यहाँ पर पूरा श्रेय दिया जाएगा बल्लेबाजी की कप्तान को करण रोहिया, जो कि गेंदबाज भी हैं, पार किया। दूसरा विकेट ले लिया और करण रोहिया आप देख सकते हैं जबरदस्त करते हैं। गेंदबाज भी बहुत बेहतरीन है, 2 विकेट करनी होगी इनकी। यहाँ पर हम बात भी इसी कर रहे थे कि शायद चौथा ओवर इसलिए उन्होंने खुद को दिया है क्योंकि वो चाहेंगे कि एक और विकेट ले लें, और सफल भी हो गए। ऊपर की गेंद, बड़ा शॉट खेला और ये हवा में खेला हुआ शॉट मौजूद था तो नहीं खेलना चाहिए था। और ये आउट। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे, बल्लेबाज स्ट्राइक पर विकेट लेना चाहेंगे यहाँ पर, आसान सी बात है इस तरह के कैचेस लेना। सफल भी हो गए हैं कप्तान करण रोहिया। बेहतरीन गेंदबाजी और रोहित अय्यर का विकेट ले लिया है। वाह, लॉन्ग ऑफ पर सदानंद पुजारी ने रक्षक हैं और आसान सा कैच लपका, लेकिन यहाँ पर पूरा श्रेय दिया जाएगा बल्लेबाजी की कप्तान को करण रोहिया, जो कि गेंदबाज भी हैं, पार किया। दूसरा विकेट ले लिया और करण रोहिया जबरदस्त करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बाहरी किनारा, और यहाँ पर हम बात भी इसी कर रहे थे दर्शक मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, चाहेंगे कि एक और विकेट ले लें, और सफल भी हो गए। ऊपर की गेंद, बड़ा शॉट खेला और ये हवा में खेला हुआ शॉट मौजूद था तो नहीं खेलना चाहिए था। और ये आउट। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे, विकेट लेना चाहेंगे यहाँ पर, आसान सी बात है इस तरह के कैचेस लेना। सफल भी हो गए हैं कप्तान करण रोहिया। बेहतरीन नहीं ली है गेंदबाजी और रोहित अय्यर का विकेट ले लिया है। वाह, लॉन्ग ऑफ पर सदानंद पुजारी ने रक्षक हैं और आसान सा कैच लपका, लेकिन यहाँ पर पूरा श्रेय दिया जाएगा बल्लेबाजी की कप्तान को करण रोहिया, जो कि गेंदबाज भी हैं, पार किया। दूसरा विकेट ले लिया और करण रोहिया जबरदस्त करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बाहरी और ये बढ़िया गेंदबाजी। अमोल सराफ का यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, शायद ड्राइव करना चाह रहे थे हवा में, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और बच गए। यहाँ पर ऑफ स्टंप के पास तो नहीं गई गेंद, लेकिन शरीर से ना रुकती तो शायद स्टंप्स पर जा सकती थी। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करण रोहिया की। चौथा ओवर है इनका ये, और इस ओवर में 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिए। तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान की। अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, खराब गेंद को भेजा है सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। जबरदस्त शॉट यहां पर। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, 4 रन, बेहतरीन शॉट। खराब गेंद को ऐसे ही सिर्फ 1 रन दिए। तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान की, उसको सही जगह पर पहुंचाना चाहिए। देखिए रिप्ले, अगली गेंद, बढ़िया बेहतरीन शॉट, खराब गेंद को
भेजा है सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। लाइव आ गए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। नीचे लोअर पैनल के नीचे वैले पार्किंग अवेलेबल करके कभी 6 किया, क्या हो गया? अरे अंदर नहीं हो। अरे ये थोड़ी, हाँ उधर वैले पार्किंग अवेलेबल करके। सात ओवर में 55 रन का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल राजपूत आए हैं, नए गेंदबाज, और बहुत ही छोटी गेंद ये, हालांकि बहुत ही अजीब सा शॉट भी था। स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, 1 रन मिल गया यहाँ पर हिरेन चांदे को। राहुल हिरेन चांदे कप्तान हैं एवेंजर्स के मिसफिट्स। गेंदबाजी करते हुए राहुल राजपूत के पहली गेंद पर लेग बाय मिला है 1 रन। बढ़िया कट शॉट, छोटी गेंद, बाहर की गेंद, हाथ खोले यहां पर, 1 ही रन। स्वीपर कवर मौजूद है। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं राहुल। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा शॉट खेला हिरेन ने, तारीफ करनी होगी। कवर पॉइंट पर 1 रन लिया तेजी से। क्या यहां पर दूसरा लेंगे? यहां पर थोड़ी सी चूक हुई क्षेत्ररक्षक से, लेकिन दूसरा नहीं लेंगे, एक ही से संतुष्टि। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर। बढ़िया शॉट, डीप मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन मिलेगा। वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है। मोल सराफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए राहुल राजपूत का यह पहला अच्छा ओवर अभी तक। 5 गेंदों पर 4 रन आए हैं, जिसमें से 1 लेग बाय था।
और ये बढ़िया शॉट, एक ही रन होगा, दूसरे के लिए आना चाह रहे थे लेकिन एक सही संतुष्टि की। ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल राजपूत का बढ़िया ओवर, अच्छे गेंदबाज हैं और बढ़िया शुरुआत भी कराई अपने स्पेल की। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सुनील सोमराजन को गेंद थमाई गई है, इनका पहला ओवर, और स्ट्राइक पर कप्तान हिरेन चांदे। और ये आउट हो गए हैं पहली गेंद पर। जी हाँ, ये विकेट गिरता हुआ यहां पर। LBW करार दिए गए। और ये एक और विकेट, तीसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर। आपको रिप्ले दिखाएंगे बार फिर से किस तरह से ये आउट हुए। तारीफ करनी होगी यहां पर गेंदबाज की, पहली गेंद पर ही चलता किया बल्लेबाज को। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये पहली गेंद पर अपील किया और यहां पर और आउट। हिरेन चांदे क्रॉस बैटेड शॉट पूरी तरह विकेट के सामने यहां पर पग बाधा आउट हुए, जिसे अंग्रेजी में LBW कहते हैं, लेग बिफोर विकेट। 3 विकेट गिर चुके हैं एवेंजर्स के, 60 रन पर 3 विकेट 8.1 ओवरों में। सुनील सोमराजन ने आते ही एक झटका दे दिया है एवेंजर्स को। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद पर चलता कर दिया कप्तान हिरेन चांदे को। बढ़िया गेंद एक बार फिर से, और यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद है, रनिंग खराब यहां पर, और ये एक और रन आउट। बहुत ही खराब कॉलिंग, और ये चौथा विकेट भी गिरता हुआ। और ये क्या हो रहा है, 2 गेंदों पर 2 विकेट गिर गए हैं। इस मैच का पूरा समीकरण बदल गया है। अचानक से ही इस मैच पूरी तरह से करवट बदल ली है। रिप्ले दिखाएंगे यहां पर कैसे आउट हुए नए बल्लेबाज, आते ही चलता कर दिया। और ये खराब रनिंग थी, रन लेने की आवश्यकता थी ही नहीं यहां पर। पहली गेंद है आपकी, आप चाहेंगे आराम से अपने आप को पहले, और सीधे रक्षक के हाथ में थी, तो ये तो बहुत ही खराब कॉल। जी हाँ, बिल्कुल भी खुश नहीं अपने साथी खिलाड़ी अमोल से, लेकिन रवि चौहान आए हैं नए बल्लेबाज अमोल सराफ के साथ। ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 60 पर 4 हो गया स्कोर, 9वां ओवर चल रहा है, और अचानक से ही 2 विकेट गिरने की वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किलों में पड़ गई है एवेंजर्स की टीम। सुनील सोमराजन की अगली गेंद, और ये वाइड गेंद, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, और अंपायर बिना हिचकिचाए से वाइड दिया। तो ये 2 अच्छी गेंदों के बाद एक खराब गेंद रवि चौहान की है, और अच्छी गेंदबाजी रवि चौहान ने भी अच्छे से खेला इसे। बढ़िया वापसी सुनील की, तारीफ करनी होगी यहां पर सुनील सोमराजन की। इनके आते ही इनके पहले ओवर में इस खेल ने करवट बदल ली है पूरी तरीके से। और एवेंजर जो इतना बढ़िया खेल रहे थे एक वक्त, समय तो 4 विकेट गिर गए हैं 60 रन के नुकसान पर। तो रवि चौहान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अमोल सराफ के साथ, जो पहले से ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 रन बना चुके हैं 16 गेंदों पर। हल्की गेंद, ये बहुत ज्यादा फ्लाइट दी इसे, और आंखों के ऊपर से लाकर चकमा देने का प्रयास किया, हालांकि सफल नहीं हुए। अच्छी तरीके से खेला उसे रवि चौहान ने। और एक और वाइड होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। क्या ये वाइड है? जी हाँ, अंपायर ने इसे वाइड दे दिया है।
लेग स्टंप के बाहर की गेंद और 2 वाइड अब इस ओवर में आ गई हैं। बढ़िया शॉट और अपना खाता खोला यहां रवि ने स्वीपर कवर की तरफ खेलकर। और ये ओवर की समाप्ति। तिरसठ रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवरों के बाद। और राहुल राजपूत आए अपना अगला ओवर लेकर। बेहतरीन गेंदबाज हैं और क्या जबरदस्त गेंदबाजी। बच गए यहां पर बल्लेबाज। और कैसे बचे कोई नहीं जानता। यहां पर क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे थे। थोड़ा सा मुझे लगता है यहां पर शायद गेंदबाज दुर्भाग्यशाली। क्या गेंदबाजी है। रवि चौहान बच गए। पहली गेंद पर चलता कर सकते थे राहुल ने। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं। बढ़िया शॉट। 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन की दिशा में। और ये शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी इसलिए बच गए। तो निर्णय तो बहुत ही सही था ये, लेकिन बहुत ही करीबी मामला। शायद आउट भी हो सकते थे। पूरी तरीके से मैं गेंदबाज के रिएक्शन को गलत नहीं कहूंगा। वापस लाइव आ गए हैं। राहुल राजपूत अच्छे गेंदबाज हैं। विकेट भी लेते हैं अपने दल के लिए जहां भी खेलते हैं। और ये बड़ा शॉट इस बार लेकिन आउट हो गए हैं। जैसे ही हमने बोला राहुल राजपूत अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने इसे साबित भी कर दिया। और एक बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन पर लिया गया है। और अमोल सराफ की ये पारी अब समाप्त होती हुई। जी हाँ, ऐसा लग रहा था हमारी कमेंट्री सुन रहे थे ये। और जैसे हमने इनकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सही तारीफ की आपने हमारी, और ये लीजिए हम आपको विकेट भी देते हैं। ये देखिए कैसे विकेट आउट हुए। आपको रिप्ले दिखा रहे हैं यहाँ पर। अमोल सराफ बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे राहुल राजपूत को, लेकिन लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच दे बैठे। और 5वां विकेट गिर गया है एवेंजर्स का। बहुत ही विकेट समस्या में अब एवेंजर्स का दल। ये देखिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। बढ़िया फ्लाइटेड गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। यहां ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद और आसान सा कैच लपक लिया यहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक ने। और राहुल राजपूत की ये पहली सफलता और अपनी टीम को उन्होंने 5वीं सफलता दिला दी है। 5 विकेट गिर गए हैं यहां पर एवेंजर्स के। और ड्रिंक्स ब्रेक का यहां पर निर्देश अंपायरों का। 5 विकेट सिर्फ 64 रन पर। एक समय 50 पर 1 स्कोर था और अब 64 पर 5। तो यहां पर काया पलट हो गई है इस मैच की बढ़िया गेंदबाजी के चलते और बढ़िया क्षेत्ररक्षण भी। एक छोटा सा विराम लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।
नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर, राहुल राजपूत अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए। बढ़िया शॉट, यहाँ पर 1 रन मिलेगा आसानी से। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ, तेजी से रन लिया और रन आउट का यहाँ पर एक प्रयास। राम माने आए हैं नए बल्लेबाज और 1 रन से खाता खोला अपना पहली गेंद पर। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, बैकफुट पंच और 4 रन के लिए खेल दिया इसे कवर्स के क्षेत्र में। क्या जबरदस्त प्रहार था यहां पर रवि चौहान का, तारीफ करनी होगी इनकी। बहुत ही बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर जिसे कहते हैं किसी भी दल के लिए। इस तरह के बल्लेबाज बहुत जरूरी, बढ़िया बल्लेबाजी क्रम के लिए। 4 रन पे अब आखिरी गेंद बची है। 69 रन पर 5 विकेट स्कोर है। एक बार फिर से बैकफुट पर गए, लेकिन इस बार शायद क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पर। 1 रन मिलेगा और ओवर की समाप्ति यहां पर 10 ओवर के बाद 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आपको रिप्ले दिखाएंगे किस तरह से वो चौका लगाया था रवि चौहान ने। 70 पर 5 है स्कोर। ये रिप्ले देखिए, यह शॉट था, ये देखिए शॉट कवर मौजूद था वहां पर, लेकिन उसके पास से गेंद निकाली और भेजते हुए गई 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार। और 10 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा विराम लेंगे और वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ अंग्रेजी कमेंट्री लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। And we're back live. That's a wide to start, and that's a poor delivery. Abhijit Ahir starting off with a wide and 4 runs given. That's not a very good start at all. A poor start indeed. And a boundary given for no reason. 5 runs added to the tally. What a poor start that is. Ravi Chauhan on strike would be happy, but he's got 5 runs just as a gift. Oh, he's cleaned him up. He's got him, and he's so unlucky there. The batsman couldn't do much about it. That has just been so low after it bounced, and that is really unfortunate for the batsman. Nothing could be done here. There was absolutely no bounce after that pitched. Just have a look at that. Oh, and that's a really, really unfortunate thing for the batsman here.
So the 6th wicket is down. And Avengers now 75 for 6, and Ravi Chauhan, the most dependable batsman, has to go back to the pavilion courtesy a very, very unfortunate decision. He was unfortunate way of getting out, not the decision. It was really unfortunate. The ball kept so low that it just skidded and got into his stumps. Couldn't have been a more unfortunate dismissal if there was any. Just have a look at that. Oh, and that is something which nobody can do anything about, unfortunately, for the batsman. He has to go back to the pavilion. 75 for 6 now in 10.1 overs. So Avengers in a lot of trouble at the moment. Gaurang Javre is a new batsman. That's a good delivery again. He's come back nicely, especially with the wicket that he's taken of Ravi Chauhan. Oh, and that's a good shot. Gaurang Javre playing it brilliantly towards the deep backward square leg. Could be a boundary here. Oh, and that's a wonderful stop by Ashir. What a chase that was by the fielder. Just 2 runs given there, but that was a wonderful shot and equally well fielded. The fielder ran all the way from deep mid wicket to a deep backward square leg. What a chase that was, and stopped a certain boundary there, saving 2 runs for his team. Ashir. Next delivery. Plays it well. Gaurang takes a quick single. Oh, and he's asked him to go back. Chance of a run out, and he misses that. The wicket keeper. Probably Gaurang was back into his crease as well. In the air and safe. That was a slower delivery, bowled really well. Probably he was not ready for that delivery. Trying to play the drive, but playing it in the air. That's a good shot, just a single. A single taken, the long off does well. That's the end of the 11th over. 79 for 6 after 11. We'll take a quick break and be back. So stay tuned, view. Rohit Nimbalkar coming with his next over. That's a good start. A brilliant Yorker. Right on the first delivery of his second over. It's a good shot, just a single. To the long off once again. Ram Mane and Gaurang Javre both on 3 or 4 deliveries.
Should be a wide, is a wide. Too much outside that off stump line. Oh, and that's a good delivery. And a quick single taken by Gaurang. Oh, and that's a good shot in the air, but is there a fielder out there? There's no fielder, just a single. Coming back for the second this time. But Ram Mane says no, Gaurang. It's almost halfway down the track for his second run, but Ram Mane sends us back, and probably the right call as well. Gaurang could have been in trouble, but he was charging up really well. This is the 12th over. Another good delivery by Rohit. Just one left in this over. That's a good delivery, played well. Straight down the ground, just a single. The long off. Sadanand Pujari, one of the best in the business, stops it, and nobody would think of taking a second run when Sadanand is on the field. He's got a really good eye and a wonderful arm as well, a very strong one. That's the end of the 12th over, 84 for 6, and we'll take a quick break and be back soon. The Avengers all of a sudden have lost a lot of wickets. They were 50 for 1 and now 84 for 6. Stay tuned, we'll be right back. Abhijit Ahir coming to bowl his second over. Oh, and that's a good delivery. Played well by Gaurang. Just a single this time. The long on is placed for that shot. That was a good delivery. He's just giving it a bit of flight as well, along with the pace that he's bowling at. Oh, and appealing for the LBW, but missing the leg stump for sure. The umpire not interested in leg by. Signal by the umpire. A single taken by both the batsmen. Another run added to the tally. Oh, and that's a wonderful piece of wicket keeping. Just have a look at that. He played it really well, but equally well fielded by the wicket keeper. Absolutely stunning bit of work there by him. Stopped a certain boundary that was cheekily played, and that was a deliberate shot as well. So all credit goes to the keeper there. Just have a look at that, how he managed to save this. Not the one that we're showing you right now. Next delivery after that, we're live now. We'll show you the replay sometime. Oh, and that's a big shot. There's no fielder out there, and could be a boundary, will be a boundary in the deep mid wicket region. What a shot that is. Brilliantly played by Ram Mane. I beg your pardon, that was Gaurang.
What a shot that was. Absolutely stunning bit of work. Got to give it to him. That was such a wonderful piece of batting. And he's trying to up the ante, Gaurang, for his team. That was such a nice shot. Picked it up brilliantly. Pitched up and we're back live again. And in the air again. This could be another big one. Couple of runs taken. It's time. He's playing a wonderful knock here, Gaurang. And all of a sudden he's raised to 12 of just 11 deliveries. That was the boundary that he played so well on the previous delivery. What a shot that was. Picked it up from outside the off stump. Another good shot this time. Just a single towards the deep mid wicket. He's playing some really good shots, Gaurang. And that's the end of the 13th over, an expensive one. 9 runs of the over by Abhijit. And the score after 13 is 93 for 6, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Sunil Somrajan coming to bowl his next over. This is the second of a spell, the 14th in the innings. Avengers 93 for 6. 7 overs remaining. Still a lot of cricket left in this innings. They need to just save wickets and stay at the crease. That's a good start by Sunil, pulling it outside the off stump and with a slightly flattish trajectory, not giving the flight to the batsman. It's a good delivery again. So 2 dots in a row. Gaurang taking his time, and that is what is required actually at this point of time. Cannot get carried away and lose his wicket just like the other batsmen. Apart from Ravi Chauhan, some poor shots played by the batsmen and losing their wickets in the process. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. Just bowling it within the stumps and brilliant pitching as well. Oh, and this time a flighted delivery played well towards square leg for a single. A quick single taken. Just a single given till now in the first 4 deliveries by Sunil Somarajan. This is the 14th over. They would be eyeing a score of at least 140 if they are able to save their wickets. Ram Mane is a class act as well in the death overs. He has the ability to hit big shots, and Gaurang is already playing so well. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. He's bowling a wonderful length and a teasing line just outside the off stump. That's the way to bowl. Some really good flighted deliveries. The spinner is doing his job brilliantly. Oh, and the under edge this time. Will that go to the boundary? We'll have to see that. The ball probably stops, but a good chase by the fielder as well. A couple of runs taken. That was the under edge, and that's a very good over by Sunil. Just 3 of the over, and the score after 14 overs is 96 for 6. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Last 6 overs remaining in this first inning.
And we're back live. Rahul Rajput being introduced into the attack once again. He's bowled 2 wonderful overs and taken a very important wicket as well. That too of Amol Saraf. That was a very important wicket in the context of this game. Rahul Rajput is a wonderful bowler. The offie bowls a poor delivery on the first ball of his 3rd over. He's lucky he's just given a single there. That was almost a half tracker. Sometimes you don't get the loop and the grip. That's what happened with Rahul. But the batsman not getting the desired result out of that short delivery. A half tracker by Rahul. Coming to bowl is next. And this is the one which you want to bowl as a bowler. Very good flighted delivery and Ramane. He's on 6 of 8 deliveries. Gaurang 15 of 17. Rahul Rajput again. In the air, that's a good delivery and a wonderful shot this time. And this will be a boundary. What a shot that is by Ramane. And that's the 100 up for the Avengers. Wonderfully played by Ram. Wide of the mid-off field, long-off fielder. That was a wonderful shot. Rahul coming to bowl his next delivery. That's a good shot again this time. Will that be a boundary? Just a single. The fielder does well. Oh, and this time it should be a wide. Is a wide. Just have a look at that boundary replay. Played really well over the extra cover fielder. For a boundary, what a shot that was by Ramane. And we are back live. A wide bowled by Rahul Rajput. This is his 3rd over, and this has been a slightly expensive over till now. 7 runs of the over. Could have been a bit better had that boundary not been scored, but then that was a good shot, so credit goes to the batsman there. Oh, and that's a wonderful delivery. This is the one that he bowls so well. Just outside that off stump and slightly skids it through. This time he almost got that wicket as well. Was not comfortable. Gaurang with that delivery. And he's a gritty customer, this guy, Rahul Rajput. Oh, and what a delivery. Brilliant bowling this is. Taking it slightly away from the batsman. Outside it off some line again. And brilliant bowling. The 15th over comes to an end. The score is 103 for 6. After 15 overs, a good over by Rahul. And a great comeback in the last 2 deliveries by not giving even a single run. 2 dot deliveries. And Sunil Somarajan coming into bowl is next. This is his 3rd over. Sunil. Starts off nicely with a delivery within the stumps, but probably missing the leg stump, appealing for an LBW. That was bat as well. Yes, that was bat. No signal by the umpire. That's a good delivery, trying to take the quick single, but Karan Rohia is at point and doesn't allow the single to happen. Ramane sends him back. Gaurang still on strike. Oh, that's a good shot, but no run this time again. He's playing it softly. He should have hit it with some more power. Probably that was the reason it did not lead to the single. Oh, and this time the edge. Probably this will run to the boundary, but there is a good chase. And Rahul Rajput is the fielder.
He's such a live wire on the field, this guy. What a chase that was. Stops 2 runs for his team, saves a couple of runs. Very important 2 runs. They have to chase these runs, so whatever they save on field is an added bonus to them. Sunil Somarajan bowling a wonderful spell. This is his 3rd over and he's given only 3 runs. His 3rd over. Just 2 deliveries remaining, so Gaurang will try and hit a big one. That's a short delivery played well by Gaurang, just a single though. Coming back for the second Gaurang, but Ram Mane says no, and that was the right call. Would have been in trouble. That was a good throw from the deep. Last delivery of this 16th over. Oh, and that's a wonderful shot and probably away from the fielder as well. That's a wonderful shot. Goes into the boundary. What a shot that was by Ram Mane. Playing it away from the long gone fielder. Absolutely brilliant batting, and that's the end of the 16th over. The score is 111 for 6, and we'll take a quick break and be back soon. We'll show you the replay for that brilliant boundary. And we'll return with the Hindi commentary now for the next few overs. Just have a look at that replay. What a shot that was by Ram Mane. Brilliant shot. Played well away of from the long on fielder. Ram coming into bowl. That's a good shot played by Gaurang. This could be a boundary. Ashish Patel chasing it brilliantly and trying to come back for the 3rd, but Ashish's throw is so powerful from the deep. Doesn't allow that to happen. And allow us to switch to the Hindi commentary now till the end of this innings. राम आए हैं अपना अगला ओवर लेकर, और ये दूसरी गेंद इनके तीसरे ओवर की. बढ़िया शॉट, इस बार 2 रन के लिए आना चाहेंगे लेकिन यहाँ पर मना किया राम माने ने. और बढ़िया निर्णय यहाँ पर राम माने का गौरांग को वापस नहीं बुलाने के लिए. बहुत बढ़िया खेल रहे हैं गौरांग. 20 पर आ गए 24 गेंदों के बाद. राम माने 16 13 गेंदों के बाद. बेहतरीन साझेदारी है. 6 विकेट गिर गए थे 64 रनों पर. 70 के आसपास गिर गए थे 6 विकेट. उसके बाद क्या बेहतरीन साझेदारी निभाई है इन दोनों बल्लेबाजों ने. तारीफ करनी होगी दोनों की. राम की अगली गेंद. बढ़िया शॉट. पंच किया. स्वीपर कवर की दिशा में 1 रन लिया. 1 रन से भी अगर काम चलाएंगे तो स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा. 140 पहुंचने की पूरी उम्मीद. जिस तरह की कहानी थी इस पारी की बीच में, खास करके पहले विकेट के बाद जब धड़ाधड़ विकेट गिर गए 4-5. बढ़िया गेंदबाजी, और ये अचानक से तेज गेंद डालते हैं. एक खासियत है उनकी. और ये बेहतरीन गेंदबाजी, स्लोअर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी. पूरी तरह से छका दिया, चकमा दे दिया बल्लेबाज को.
जबरदस्त गेंदबाजी और 2 डॉट गेंद 17वें ओवर में, डेथ ओवर्स चल रहे हैं, इससे बढ़िया गेंदबाजी तो हो ही नहीं सकती है। तारीफ करनी होगी यहाँ पर राम की। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं इस ओवर की आखिरी, और ये कैसे बच गई, ऐसा लगा क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन अंदरूनी किनारा और 4 रन के लिए गेंद चली गई फाइन लेग की दिशा में। बहुत भाग्यशाली यहाँ पर बल्लेबाज और उतना ही दुर्भाग्यशाली गेंदबाज। आप देख सकते हैं गेंदबाज के चेहरे की जो इस समय स्थिति है वही आपको पूरा माहौल बता देगी कि कितना ज़्यादा निराश हैं, और होना भी चाहिए। बहुत ही भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज। ये देखिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी थी, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये देखिए बच गए यहाँ पर, रिप्ले दिखा रहे हैं आपको। 4 रन के लिए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर फाइन लेग की दिशा में। ओवर की समाप्ति बहुत ही बढ़िया ओवर था ये राम का, हालांकि चौके से समाप्ति हुई। 8 रन बने उस ओवर में, 119 पर 6 है स्कोर 17 ओवर के बाद। आखिरी 3 ओवर बचे हुए हैं, 18 गेंदें बची हैं, और अब देखना है कि 18 गेंदों पर क्या ये 31 रन बना पाएंगे। 150 पहुंच जाएंगे और 31 बनाएंगे, और राम माने के होते हुए बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है, बन सकते हैं 31 रन। रोहित तिम्बाल कराएं अपना तीसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर राम माने, बढ़िया गेंदबाजी, 1 ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर। एक रन लिया तेजी से वापस। आगे बढ़कर खेला ये शॉट, और क्या यहां पर 2 रन लेंगे। पहले रन के लिए तेजी से भागे, लेकिन 1 ही रन। सदानंद पुजारी है वहां पर, 2 रन का तो यहां पर सवाल ही नहीं उठता है। क्या बेहतरीन थ्रो, लॉन्ग ऑफ सर भाग कर आए, और उसके बावजूद 1 ही रन दिया। तारीफ करनी होगी यहां पर। अगली गेंद, और ये बेहतरीन गेंदबाजी रोहित की। डॉट गेंद इस समय सोने चांदी से कम नहीं है। जी हाँ, ये 18वां ओवर चल रहा है।
ये इनका तीसरा ओवर है और 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए हैं 18वें ओवर में। इससे अच्छी गेंदबाजी तो हो ही नहीं सकती। बढ़िया शॉट खेला लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। स्क्वायर लेग तैनात है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी है और डेथ ओवर्स में अगर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो कप्तान तो आपके मुरीद हो जाएंगे एक गेंदबाज के तौर पर। और वो भी अच्छे बल्लेबाजों को। राम माने 18 पर खेल रहे हैं 16 गेंदों के बाद, 19 पर आ गए हैं 17 के बाद। गौरांग झावड़े को देखिए 26 पर खेल रहे हैं और अब स्ट्राइक भी ले रहे हैं। बेहतरीन शॉट आगे आकर खेला लेकिन एक रन ही होगा। सदानंद पुजारी है वहाँ पर। और सदानंद पुजारी के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरह के क्षेत्र रक्षक हैं, वो बल्लेबाज भी ताबड़तोड़ हैं, लेकिन क्षेत्र रक्षण एक अलग ही ऊंचाई छुई है उन्होंने। क्या ज़बरदस्त क्षेत्र रक्षण करते हैं। और ओवर की समाप्ति यहाँ पर 18 ओवर के बाद स्कोर 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। राम माने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। गौरंग जावड़े ने भी ज़बरदस्त तरीके से अभी तक टीम की बागडोर संभाल रखी है। खास करके जब 6 विकेट गिर गए थे उसके बाद क्या ज़बरदस्त और बेहतरीन साझेदारी निभाई है इन दोनों बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर में सिर्फ 4 रन आए और तारीफ करनी होगी यहाँ पर रोहित की। बेहतरीन ओवर डाला और अभिजीत आहिर आ रहे हैं अपना तीसरा ओवर लेकर। 19वां ओवर इस पारी का और 150 का आंकड़ा छूने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आखिरी 12 गेंदों पर। एवेंजर्स को 27 रन चाहिए उन्हें 150 के लिए। 123 का स्कोर हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी 12 गेंदें। हवा में खेला हुआ शॉट बेहतरीन तरीके से उसे पिक किया था लेकिन एक ही रन लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर। शॉट बहुत बढ़िया था। अभिजीत की तारीफ करनी होगी। अंत में गेंद को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाती है बल्लेबाज के लिए। तेज गेंदें नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। ऐसा लगता है इनके एक्शन से कि साधारण गेंदी आएगी लेकिन अचानक से धीमे हो जाती है गेंद। तो ये तारीफ है जिसके ये काबिल हैं। और ये बहुत बेहतरीन इनकी कलाकारी। स्लोअर गेंद कहते हैं, बहुत ही मुश्किल होती है बल्लेबाजों के लिए और उसमें इनकी महारत हासिल है। ये देखिए एक और स्लोअर गेंद, हल्की गेंद, धीमी गेंद, बढ़िया शॉट। 2 रन के लिए वापस आएंगे इस बार। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी राम और गौरांग की तारीफ करनी होगी दोनों की। बड़ा शॉट और यहां पर कैच था ये लेकिन छूट गया। और सागर थे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था और कैच छूटा। 2 रन ले लिए यहां पर राम माने, 3 ले लिए शायद। आगे बढ़कर खेला हुआ एक बेहतरीन शॉट। सदानंद पुजारी हैं, एक ही रन देंगे। खासियत है इनकी, गेंदें नहीं छोड़ते हैं जब क्षेत्र रक्षण करते हैं। और इस ओवर की आखिरी गेंद, बेहतरीन शॉट लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद है, एक ही रन होगा। और ओवर की समाप्ति 19 ओवर के बाद स्कोर 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक ही ओवर बचा है इस पारी में। को दिखाएंगे कैसे वो बड़ा शॉट कैच हो सकता था। ये देखिए राम माने का बेहतरीन शॉट डीप मिड विकेट पर। एक क्षेत्र रक्षक था वहां पर लेकिन
कैच भी छूटा और गिर भी गए, इस कारणवश 2 रन आसानी से मिल गए। 1 ओवर बचा है सिर्फ इस पारी में। सुनील सोमराजन आए अपना आखिरी ओवर लेकर। और ये पारी का भी आखिरी ओवर है। और ये कैच छूट गया यहां पर। आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, सदानंद पुजारी से कैच छूटा। 1 ही रन। बढ़िया शॉट, 4 रन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर खेला, बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। तारीफ करनी होगी यहां पर राम माने की। अंतिम ओवर है और पूरा कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का अपने दल के लिए। अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, 1 ही रन। अच्छा फ्लाइट यहां पर स्पिनर का। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास। 2 रन के लिए आएंगे क्या? जी नहीं, राम माने ने बोला 1 ही रन। राम स्ट्राइक पे आना चाहते हैं क्योंकि बड़े शॉट्स खेलने में सक्षम हैं और कोशिश भी इनकी जारी है बड़े शॉट्स खेलकर अधिकतम रन लेने का। और ये अच्छी गेंद मैं कहूंगा, पूरी तरह से चकमा दिया, लेकिन 2 रन हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। गौरांग आ गए हैं वापस, राम माने भी पहुंच गए क्रीज के अंदर। चूक गए थे पूरी तरह से यहां पर राम, लेकिन बच गए कि कवर्स और कवर पॉइंट के बीच में आकर गेंद गिरी। और ये आखिरी गेंद इस पारी की, और ये वाइड गेंद। जी हाँ, वाइड है ये। बढ़िया शॉट, 2 रन के लिए वापस आएंगे। जी हां, और ओवर की समाप्ति, 20 ओवर की भी समाप्ति होगी। 141 रन स्कोर है, 142, 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में, और 143 रन का एक अच्छा लक्ष्य दिया है मिसफिट्स को एवेंजर्स ने। और एक 10 मिनट के विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। टॉस जीत कर यहां मिसफिट्स ने एवेंजर्स को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए, और 142 का स्कोर बनाया 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। 143 की दरकार मिसफिट्स को इस मैच को जीतने के लिए।
Sagar Singh strike. We are back live with the second innings in this TSL match, and Sagar and Varun are the opening batsmen for the Misfits, and Avengers have to defend 142 if they want to win this match. 143 is the target for the Misfits, and we welcome all our viewers once again to the second innings of a wonderful match happening at the Fatima Cricket Ground. The Misfits winning the toss, electing to field first, and Avengers scoring 142 in their stipulated 20 overs. This is the start of the second innings. This is your commentator Shalin Gupta, welcoming all the viewers once again who've been watching this tournament throughout the season here. It's a long tournament. We're in the second month of this tournament, so a lot of matches still to be played in the TSL. We've got 3 divisions. And here's the first delivery, and that's a wide. So Gaurang starting off the proceedings and starts off with a wide. That did swing a lot. The left hand armour getting a lot of swing here. But not the way he would have wanted to start. An extra run given, and the account is open for the Misfits. Gaurang with his next delivery. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. This is where you need to bowl as an opening bowler. A perfect line and brilliant length as well. Swinging it away from the left-hander. Gaurang Javre, a wonderful left arm pacer, has got a very smooth run up and a brilliant action as well. And he's bowled a peach of a delivery right from the word go. Sagar is a very aggressive batsman. We'll have to see how he negotiates the swing here. Oh, and that's a wonderful shot, and that is what we were talking about. He's such an aggressive batsman. Plays it on the up, and that's the first boundary by Sagar. He opens his account. What a shot that was. This was the wide that was bowled earlier. Coming to bowl is next delivery, Gaurang. A full toss in the air. Straight to the fielder and no run taken. Was trying to take the single, Varun Singh, but sent back by Sagar Kamble. That was the right decision as well. This was a good circle. That's a good delivery again, and a quick single taken. This is good batting by Sagar. And Varun Singh on strike for the first time. And we'll show you the replay of that boundary scored by Sagar in this over. Just have a look at that. That was played nicely by Sagar. Straight down the ground for a 4. Varun Singh on strike. And that's a wonderful start by Misfits. This is just the first over. 4 deliveries have been bowled. 6 on the board already. Gaurang to Varun. That's a good delivery, and that's a wide signal by the umpire. He'll have to bowl within the stumps. He's a wonderful bowler, this guy, but probably missing the line on a couple of occasions in this over. Oh, and that's a peach of a delivery again. Bringing it outside the off stump once again and taking it away from the right-hander. So that is a very good variation by the left arm spacer. As both the deliveries that comes back into the right-hander as well as goes away from the right-hander. So that is a wonderful piece of bowling. And he's a strike bowler for them as well. So the Avengers will hope an early breakthrough here. Gaurang.
Oh, and that's a good delivery. Played well by Varun. That's the end of a good over by Gaurang. 7 without loss. A good start by both the teams in the second innings. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Rohit Iyer is the new bowler. He's sharing the new ball with Gaurang. The right arm pacer coming into bowl his first delivery. On strike is Sagar. Probably he was not ready there. The field setting the captain. So Rohit will have to bowl that again. Sagar Kamble is a hard-hitting batsman. He started off well. Rohit starts off really well with the first delivery. Bang on target. Sagar plays it well, defends it nicely on the front foot. Oh, and what a shot that is. There's no fielder out there. Should be a boundary. Will be a boundary. That was a full toss and just driving it to perfection. In the sweeper cover region. What a shot that was. You're back live. Another good drive this time. And what a stop that is by the fielder. Probably they'll take only a single. Wonderful piece of work there by the covers fielder. Stopping 3 runs for his team. Varun on strike now. Let's have a look at that replay of that boundary. What a shot that was. Did it really well and we are back live. Oh, and that's a wonderful shot, but there's a fine leg in place. Played it well towards the fine leg for a single. Sagar back on strike to 6 already of this over. Both these batsmen playing really well. Coming to bowl his next delivery. That's a good shot played straight down the ground. A quick single taken as... Oh no, he's been sent back.
So Varun saying no, probably the right decision as well. Could have been in trouble had they gone for that single. Just have a look at that wonderful fielding effort, worth a replay. Oh, brilliant that was. Special effort by the fielder, saving 3 runs for his team, and that's what is required. Oh, and that's a poor delivery, way down the leg side. No hesitation by the umpire to call it a wide. Rohit Iyer, slightly expensive in his first over, 7 already of that over. 5 deliveries have been bowled, 1 still to go, and Sagar playing slightly conservatively the way he hits the balls. We've seen that he's a fierce hitter. Oh, and that's a very poor delivery. Could be a boundary on the wide. Absolutely poor bowling this is. Just giving away some really important runs as gifts. And the new year has already started, so probably the gifting season still going on. That was not the right line at all. That was a poor delivery, way outside that off stump line. No chance for the fielder at third man as well, even when he was fine in the third man region. Still he could not reach and stop that ball going out of the fence, and should be a wide again. Is a wide. So his problems continue. Rohit Iyer, very expensive in his first over, score already 20 without loss after just 1.5. So he'd given 7 of the first 5 deliveries, and now he's given 13 of the first 5 deliveries. Courtesy some poor bowling, not maintaining the line. Oh, and that's a good delivery, but played well, and a quick single taken by Sagar again. And that's a wonderful backing up done by Gaurang. So that's the end of the second over. The score is 21 without loss. That's a wonderful start by Misfits. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Gaurang Javle starts off with a wide. So some loose bowling here by the opening bowlers of Avengers. Already 22 on the board. Not the kind of start the captain would have wanted from the opening bowlers. They will have to find their line as soon as possible, else the match could go away from them very quickly. That's a good delivery. Good comeback and a quick single taken this time. A chance of a run out, but he misses that. Not a good piece of work there. Sloppy bit of work by the fielder. Sagar Kamble doing the right thing, just rotating the strike when the ball is not there to be sent to the boundary. Varun Singh has played only 3 deliveries till now. And a run to his name. Has just opened his account. Gaurang to Varun. What a shot that is. Could be his first boundary. There's a fielder out there. And he misses that. This is not at all good cricket by the fielders. They are letting it loose here. Giving away some really easy runs to the batsman. Varun Singh gets his first boundary. And the score has reached 27 in just 14 deliveries. What a start. Almost 12 runs and over is the run rate at the moment.
That's a good comeback, and they'll take a quick single, and that is a really good piece of work there by both these batsmen. No chance for Ravi Chauhan, who was standing at short covers. Still, they could take that single, which means the quality of running is really high, and the intent is very good, especially when it comes to running between the wickets. That's a good shot again. Should just be a single. There's a fielder out there at long off, the captain himself. Wasn't back on strike. That was a good shot by Sagar. Got a lot of punch in his bat and his shots. That's a good piece of work by the batsman. A good ball by Gaurang. Played with a straight bat. Wonderful forward defense by Varun Singh. And that's a good over. Good end to the over. Although 8 runs of that over, but still the last 2 deliveries dots. And that's the end of the third over. 29 without loss after 3, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Rohit Iyer coming into bowl his next over. That's a good start and appealing for an LBW, but probably missing the leg stump. That was a good decision by umpire Yadu Churi. He's a very experienced umpire, this guy. That was a wonderful decision. No chance for that LBW appeal. Rohit finally trying to find his line. Had given a lot of extras in his first over. Oh, that's a wonderful shot, and in the gap as well. Could be another boundary by Sagar. Will be a boundary, it seems. And it does cross the fence. What a shot that is by a wonderful batsman. He's on fire, this guy. Brilliant stuff there by Sagar Kamble. Rohit Iyer needs to be bowling within the stumps. This was again wide outside the off stump and gave away full liberty to the batsman to free his arms, and Sagar Kamble is not among those who will miss these chances. That was a wonderful shot, played in the gap beautifully. Coming to bowl his next delivery, Rohit Iyer. Oh, this time in the air, and he's gone. This is the kind of bowling that you want to bowl. And the first wicket down for the Misfits. A good catch taken by Amol Saraf at point, and 33 for 1 is the score now. It was a wonderful piece of bowling by Rohit. He gets the breakthrough for his team, and the captain Sagar Kamble, after playing a good cameo, goes back to the pavilion. Contributed nicely with 17 runs and the first wicket down on the score of 33. This is just the 4th over. It's a wonderful start, and
And you've got the new batsman Ashir Patel on strike now. Rohit Iyer coming to bowl his next delivery. That's a poor delivery again, and the keeper misses that too. So 2 runs added to the tally, and Rohit not being consistent with his line. He's given a lot of runs with the extras. Again, 2 wides added to the tally. And he's the one who's given the breakthrough, so he needs to be consistent with his line. Cannot give away so many runs by extras. If you have to defend a score of 142, already 35 on the board, just 4th over in the running. Oh, and that's a wonderful piece of bowling, and that is what you want to have from your opening bowlers, forcing the batsman to drive that. Trying to play the big shot, Ashir, right from the word go. This was Varun Singh, I beg your pardon. Varun Singh trying to play the big shot, not succeeding, almost getting the edge. Rohit coming to bowl is next. Another wide, so another poor delivery, and paying the price for not bowling the right line. Rohit Iyer, quite a lot. Too many wides till now. 13 already in just the 4th over. So that is really poor quality bowling by the opening bowlers, especially Rohit Iyer, who's given a lot of extras, although he's taken a wicket. Needs to bowl within the stump, especially in and around the off stump. And we all know he's a wonderful bowler. He's already taken a wicket. He's a strike bowler for the Avengers, but not getting the line right today. And this time in the air. Should be a boundary. That was again outside the off stump, giving him the freedom to play the shot. And Varun Singh gets a boundary in the 3rd man region. That was pitched up and played really well by Varun, freeing his arms, getting a license there because of the width offered by the bowler. That was a foolish delivery, and Varun Singh making sure he makes the most out of that. Not good bowling at all after taking a wicket as well. So probably needs to rethink and coming in to bowl his last delivery. And this is the one you need to bowl to the batsman. That's a good delivery, but a single taken easily by Varun, playing it towards the mid-on for a single. That's the end of a very expensive over. The score after 4 overs is 41 for 1. And we show you the replay of that boundary scored by Varun. Just have a look at that. That was a foolish delivery and way outside that off stump. That's a boundary scored by Varun. Played it really well. 41 for 1 after 4, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. We're back live. Harshad Patkar has been given the ball to bowl the next over. This is his first and the 5th of this innings. 41 for 1 already in just 4 overs. Varun Singh and Sagar Kamble have played brilliantly till now. Ashir Patel still to face a delivery. Harshad Patkar coming to bowl his first delivery. Varun Singh on strike. 11 of 10 deliveries for Varun. He's played well till now. Oh, and that's a wonderfully played shot. Crafted it well towards the 3rd man region for a boundary again. He's on fire, this guy. And that was not a poor delivery at all, but played it so well. Played it slightly late. Just sliced it in the gap for a boundary. What a shot that was by
Varun Singh. First delivery of Harshad. He welcomes the bowler with a wonderful boundary. Oh, and trying to hit the big one. Not succeeding at all. That's a good comeback. Oh, and a short delivery. Pulled it brilliantly. Will be a 6 for sure. No chance of that not going out of the park. That was a poor delivery. What a shot that was. Stunning 6 by Varun Singh. He's on fire. What a brilliant shot that was. A huge 6. Coming to bowlers next. It's a good comeback. Oh, and he misses that. Chance of a run out here. And they missed that too. So that was flirting with danger as far as Varun is concerned. That was not required, that single. Harshad would have fielded that. Could have been a lot of trouble. Just have a look at that 6. That was a brilliant shot. What a shot that was. A short delivery and dealt severely by the batsman. Given the treatment really well by Varun Singh. Absolutely stunning piece of batting. He's on 22 now of just 14 deliveries. Jfsc Tsl now facing his first delivery. Short delivery, and what a wonderful shot that is. Will be a boundary. He's played it really well, punched it hard in the extra cover region. No fielder out there, and a wonderful piece of batting by Ashiri. Opens his account in style. This is sloppy bit of work there by the bowler as well. That's a good delivery. A single taken easily. What a start by Jfsc Tsl. Let's have a look at that. It was not the Varun back on strike. The last delivery of this over. Oh, and another boundary. These guys are on fire, especially Varun Singh. He's hitting boundaries at will. What a shot that is. No chance for any fielder, just spectators, all of them. Can't set a field for shots like that. That was such a wonderful shot, and that's the end of the 5th over. What an expensive over that was. 21 of that over. And the score after 5 overs is 62 for 1, and we'll show you the replay of that brilliant shot by Varun once again. Let's have a look at that short delivery. (62 for 1) after 5, and we'll take a quick break, and first we'll show you the replay of that brilliant shot by Varun. Let's have a look at that. Wow, what a shot. A boundary there. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. अमोल सराफ को बुलाया गया है आक्रमण में, और हिंदी कमेंट्री लेकर आपके समक्ष वापस प्रस्तुत हुए हैं हम। और यह गेंदबाजी अमोल की, और शीर ने अच्छा खेला इसे। बेहतरीन शुरुआत अमोल की, लेकिन 5 ओवर में 62 रन का स्कोर हो गया है, तो तारीफ करनी होगी यहाँ पर मिसफिट्स की, खास करके वरुण सिंह की।
अशीर की बल्लेबाजी दिखाएंगे आपको। पहला चौका उनका, ये देखिए क्या बेहतरीन शॉट था एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, 4 रन के लिए। ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अशीर। हालांकि सागर कामले और वरुण की भी तारीफ करनी होगी, तो बहुत ही सशक्त ऊपरी क्रम यहाँ पर। सलामी बल्लेबाज दोनों ही बहुत बढ़िया, सागर और विनोद के रूप, वरुण के रूप में। और बेहतरीन यहाँ पर शॉट, एक बार फिर से 4 रन पुल किया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वरुण, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर। 30 पर आ गए हैं देखते ही देखते, इतनी भी तारीफ की जाए इनकी कम। एक और चौका, और चौकों की झड़ी लगा दी है यहां पर वरुण ने। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी, तारीफ करनी होगी यहाँ। देखिए क्या बेहतरीन चौका लगाया था वरुण ने, पुल किया इसे। छोटी गेंद थी, वो भी लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद। अच्छी कोशिश वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र रक्षक की, लेकिन कोई मौका ही नहीं था। वापस लाइव आ गए हैं। ऊपर की गेंद, बढ़िया शॉट, क्या खेलते हैं ये। 4 रन के लिए खेल दिया ऐसे कलात्मक तरीके से। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर वरुण की। और ये जो गैप यहां पर दिया है गेंदबाज ने और कप्तान ने, उसका भरपूर फायदा उठाया है वरुण ने। क्या शॉट था, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं मोल सराफ। 9 रन बन चुके हैं इस ओवर में। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। ये देखिए किस तरह से पिछली गेंद को चौके पर भेजा। इस गेंद के बाद वाली गेंद थी जिसे चौके पर भेजा। पहले लाइव गेंद देखते हैं। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी इस बार तो, दोनों बार वापसी अच्छी गेंदबाज की चौके खाने के बाद। ये वो गेंद है जिसे 4 रन के लिए भेजा था। ये देखिए बेहतरीन शॉट। और वापस लाइव, छोटी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। क्या यहां पर ये बड़ा छक्का होगा। ऐसा लग रहा है कि ये छक्का ही है। जी हां, 6 रन के लिए इसे भेज दिया। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, खराब गेंदों की धुनाई कर रहे हैं यहां पर वरुण सिंह। और ये ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसे कहते हैं बेहतरीन बल्लेबाजी। वरुण सिंह 40 पर आ गए हैं 20 गेंदों के बाद। क्या ताबड़तोड़ पारी खेली है उन्होंने अभी तक। जी हां, और शॉट देखिए क्या बेहतरीन था। करारा प्रहार 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं किसी भी क्षेत्र रक्षक के लिए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों दर्शकों की तरह देखते रहे सिर्फ इस गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए। और 77 रन हो गए हैं 6 ओवरों में। 12.83 का रन रेट। दोनों ही बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। अशीर पटेल 6 3 गेंदों पर, वरुण सिंह 40 20 गेंदों पर। अद्भुत बल्लेबाजी मैं कहूंगा इसे वरुण के बल्ले से। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 15 ओवर से पहले ही मैच खत्म कर देंगे। 66 रन चाहिए अब सिर्फ 84 गेंदों पर। 4.71 रन प्रति ओवर के हिसाब से। जी हाँ, इस रन चेस को इन्होंने बहुत ही आसानी से अभी तक लिया है। और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि रवि चौहान आ रहे हैं अब गेंदबाजी डालने। रवि चौहान बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी। हालांकि आज बहुत दुर्भाग्यशाली रहे जिस तरह से आउट हुए। गेंद दब गई, क्लीन बोल्ड हो गए। स्ट्राइक पर वरुण सिंह वापस, माफ कीजिएगा अशीर है स्ट्राइक पर। वरुण ने छक्का लगाया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। आगे बढ़कर बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन। क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पर।
अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, इसी के लिए जाने जाते हैं ये। रवि की अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा शॉट, वरुण का 1 रन लिया मिड विकेट की दिशा में खेलकर। क्या दूसरे के लिए आएंगे? जी नहीं, आशीर ने मना किया और सही निर्णय, 1 ही रन। बढ़िया गेंदबाजी, एक भी रन नहीं, डॉट गेंद। बेहतरीन शॉट और ये 4 रन, एक और चौका, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस बार आशीर के बल्ले से। क्या शॉट्स खेल रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। तारीफ करनी होगी यहां पर दोनों बल्लेबाजों की। इसे फेयरलेस क्रिकेट कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। बिना डरे हुए, बिना किसी परिणाम के बारे में सोचे हुए, सिर्फ अपनी प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा रखते हुए बेहतरीन शॉट और 1 रन। ये देखिए क्या शॉट लगाने की कोशिश थी। ये चौका नहीं था, आपको दिखाएंगे रिप्ले एक बार फिर से। उस चौके का जो लगाया आशीर ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो गई, 7 ओवर में 84 रन। अब ये देखिए रिप्ले दिखाएंगे आपको, बहुत बढ़िया शॉट था ये, कोई मौका ही नहीं किसी क्षेत्ररक्षक के पास। और 7 ओवर के बाद 84 रन हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, तुरंत वापस आते हैं। अमोल सराफ का अगला ओवर, बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला, लॉन्ग ऑफ की तरफ गया ये शॉट, 1 ही रन। बढ़िया शॉट था, ऐसा लगा कि एक्स्ट्रा कवर को भेद कर चौका चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग ऑफ वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खड़ा हुआ था, इसलिए 1 ही रन मिला। अमोल सराफ की अगली गेंद, हवा में खेला हुआ शॉट, अशीर पटेल का बढ़िया शॉट, एक और यहां पर चूक हो गई, लेकिन 1 ही रन लिया है, दूसरा नहीं लेंगे। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं, बढ़िया शॉट और एक बार फिर से लचर क्षेत्र रक्षण। 2 रन आसानी से होने चाहिए, लेकिन नहीं, 1 ही रन। बेहतरीन बैकिंग अप वहां पर। यहां पर एक बार फिर से मिसफील्ड हुई और 1 रन। बेहतरीन शॉट
बड़ा शॉट और ये 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। जबरदस्त प्रहार यहां पर वरुण सिंह का। जी हाँ, इनको आप हल्की गेंद तो डाल ही नहीं सकते हैं। खतरनाक अंदाज में खेलते हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं। ताबड़तोड़ प्रहार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। तारीफ करनी होगी वरुण सिंह की। तो क्या ये वाइड है? जी हाँ, ये वाइड गेंद है और 4 रन भी मिल जाएंगे यहां पर वाइड के। खराब गेंदबाजी, वाइड पे 4, 5 रन दे दिए यहां पर। और ये बहुत ही लचर गेंदबाजी यहां पर। फुल टॉस गेंद, उसके बाद वाइड, और खुश नहीं होंगे कप्तान इनके इस प्रदर्शन से। और ये अनुभवी खिलाड़ी हैं तो थोड़ा उम्मीद ज्यादा होती है अनुभवी खिलाड़ियों से कि बल्लेबाज का विकेट लेने में सक्षम ज्यादा होते हैं। देखिए छक्का किस तरह लगाया था आगे बढ़कर, बहुत ही हल्की गेंद, 6 रन के लिए भेज दिया उसे सीमा रेखा के पार वरुण सिंह ने। उसके बाद वाइड के 5 रन आ गए तो 98 रन हो गया स्कोर। और ये रन रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 14 रन बन गए इस ओवर में, अभी भी 2 गेंदें बची हैं। और इस बार आगे बढ़कर खेला बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट है ये, बड़ा छक्का। और ये 6 रन से अपने टीम के 100 रन पूरे किए। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी है ये वरुण सिंह के द्वारा। क्या ताबड़तोड़ पारी इनकी। और अपना भी अर्धशतक लगभग पूरा कर लिया है, 48 पर आ गए हैं। 24 गेंदों के बाद क्या मारते हैं, वाह। अद्भुत बल्लेबाजी, अविश्वसनीय बल्लेबाजी, अकल्पनीय हिटिंग। ये ताबड़तोड़ प्रहार यहां पर वरुण सिंह के बल्ले से 104 पर 1 हो गया स्कोर। सिर्फ 39 रन चाहिए। एक तरफा मुकाबला बना दिया है वरुण सिंह की इस बल्लेबाजी ने इस मैच को। और ये 50 रन पूरे 54 पर आ गए हैं 25 गेंदों के बाद। जी हां, स्कोरर ने ये कंफर्म किया है। देखिए शॉट, देखिए क्या बेहतरीन था, जबरदस्त प्रहार, बड़ा छक्का था ये। और अब लाइव आ गए। बेहतरीन बल्लेबाजी है, 54 पर आ गए हैं सिर्फ 25 गेंदों के बाद। और एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में, एक भी रन नहीं। अच्छा क्षेत्र रक्षण इस बार, शॉट मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र रक्षक का। और ओवर की समाप्ति, एक और महंगा ओवर, 20 रन आए इस ओवर से, 104 पर 1 हो गया स्कोर 8 ओवर के बाद। और सिर्फ 39 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए, जो मात्र एक औपचारिकता ही लग रहा है। अब 12 ओवर में 39 रन चाहिए, 3.25 का औसत यहां पर प्रति ओवर जो उन्हें चाहिए। अब रवि चौहान को बुलाया गया है, पहला ओवर अच्छा डाला था इन्होंने। बाकी गेंदबाजों की तो जो धुनाई हुई है आज वरुण सिंह के बल्ले से, क्या ही बात की जाए उसकी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी वरुण सिंह की, अद्भुत बल्लेबाजी, बॉटम हैंड का पूरा प्रयोग किया है आज। अशीर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, रवि चौहान, आसान नहीं है मारना रवि को। बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, अनुभवी भी हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिभा के धनी भी हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं अपने खेल पर। सबसे बड़ी बात तो यही है। बड़ा शॉट फिर से अशीर के द्वारा, फ्लैट चौका। ये क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है अशीर के बल्ले से, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए, सीधे आकर खेलते हैं और फ्लैट बल्ले से खेलते हैं, ये इनकी खास बात है। और करारे प्रहार लगा रहे हैं अशीर भी आज। अठारह पर आ गए सिर्फ 11 गेंदों के बाद, 108 पर 1 हो गया स्कोर। पैंतीस रन चाहिए सिर्फ इस मैच को जीतने के लिए। 12.56 का रन रेट, वो भी 90 ओवर में। इससे पता चलता है कि उच्च स्तरीय बल्लेबाजी हुई है। बढ़िया रन लिया यहाँ पर वरुण ने, बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अशीर की भी तारीफ करनी होगी, 19 पर आ गए सिर्फ 12 गेंदों के बाद। ताबड़तोड़ पारियां दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। देखिए किस तरह आगे बढ़कर खेलते हैं अशीर, बेहतरीन शॉट।
तारीफ के काबिल शॉट ये, कोई मौका ही नहीं किसी क्षेत्र रक्षक के लिए। वापस लाइव आ गए हैं। बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट, 6 रन। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, वाह। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, ये तारीफ के तो लायक हैं ही, लेकिन अद्भुत भी हैं ये, अविश्वसनीय है ये इनके शॉट्स और अकल्पनीय बल्लेबाजी। एक और बड़ा छक्का और 115 हो गया स्कोर। सिर्फ 28 रन चाहिए अब जीतने के लिए। इस मैच को एक तरफा बना दिया और इस बार विकेट कीपर से चूक हुई। स्टंपिंग का मौका यहां पर छोड़ दिया है, बहुत बड़ी चूक है। और एक बार फिर से कैच छूटा। जी हाँ, जीवन दान भी बहुत दे रहे हैं। दूसरा जीवन दान इसी ओवर में। रवि चौहान खुश नहीं होंगे। 11 रन तो बने ही इस ओवर में, लेकिन 2 बार जीवन दान कैसे दे सकते हैं आप ऐसे बल्लेबाज को। बहुत खराब क्षेत्र रक्षण आज एवेंजर्स के द्वारा। ओवर की समाप्ति हो गई यहां पर 115 पर 9 ओवर के बाद। खासे निराश होंगे यहां पर रवि चौहान, अकेले गेंदबाज जिन्होंने वरुण सिंह को मुश्किल में डाला है, और उसमें भी क्षेत्र रक्षकों और विकेट कीपर ने उनका सहयोग नहीं दिया। ये देखिए किस तरह से स्टंपिंग छूटी थी। जी हाँ, बहुत ही लचर क्षेत्र रक्षण ये, लेकिन बहुत ही धैर्यपूर्वक इस क्षण को संभाला है रवि चौहान ने। तारीफ करनी होगी उनकी एक क्रिकेटर के तौर पर। ना संयम नहीं खोया, अपने साथी खिलाड़ी पर कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। यही खास बात होती है एक बड़े खिलाड़ी की। और ये देखिए दूसरा कैच जब छूटा, हाथ का कैच छोड़ दिया। ये हाथ का आया, मुंह ना लगा, इसे ही कहते हैं। राम माने आए अपना पहला ओवर लेकर। या शॉट यहाँ पर अशीर का, और 1 रन लिया। अशीर की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। 20 पर खेल रहे हैं सिर्फ 13 गेंदों के बाद, और बेहतरीन साथ निभा रहे हैं साझेदारी में वरुण का। 116 पर आ गया स्कोर। सिर्फ 27 रनों की दरकार। जिस तरह से खेल रहे हैं लग रहा है 2 और 3 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर। बढ़िया गेंदबाजी राम की, पूरी तरह से चूके वरुण यहाँ पर। और शायद कुछ ही 1-2 गेंदें हुई हैं जिसमें आज गेंदबाजों ने वरुण को छकाया है, चकमा दिया है, और ये गेंद उनमें से एक थी। बेहतरीन शॉट, 4 रन, जबरदस्त प्रहार। एक टप्पा खाके सीमा रेखा के पार ये गेंद गई। जी हां, मैंने यही कहा कि अगर ये थोड़ी देर और टिक गए तो 2 ओवर में मैच खत्म करने का सामर्थ्य रखते हैं। जबरदस्त प्रहार। 10वां ओवर ही चल रहा है, कोई कहेगा 120 रन हो गए। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है, खास करके इस बल्लेबाज के बल्ले से जो अभी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। वरुण सिंह 64 पर आ गए हैं सिर्फ 31 गेंदों के बाद। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं राम। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन 1 ही रन। ये देखिए किस तरह से 121 हो गया स्कोर। अरे नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर। 2 रन भी लिए और नो बॉल भी हो गई तो आशीर पटेल स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट यहां पर, लेकिन नो बॉल है तो कैच नहीं होंगे। ये देखिए क्या बेहतरीन शॉट था वरुण के द्वारा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है। वापस लाइव आ गए हैं राम माने की 5वीं गेंद। बढ़िया शॉट, 1 ही रन। विमर्शन मौजूद वहां पर, बेहतरीन क्षेत्र रक्षक हैं
बहुत बढ़िया थ्रो, भी एक ही रन दिया। आशीर वापस स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी और ये ओवर की समाप्ति। 10 ओवर के बाद स्कोर 124 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 19 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। एक छोटा सा विराम लेंगे क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक के निर्देश दिए अंपायरों ने। जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ वापस, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। रवि चौहान आए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर। अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने अभी तक। अकेले गेंदबाज जिन्होंने वरुण सिंह को मुश्किल में डाला है। पिछले ओवर में 2 बार वरुण का विकेट ले सकते थे, हालांकि क्षेत्र रक्षकों ने साथ नहीं दिया। वरुण सिंह 66 पर खेल रहे हैं 33 गेंदों के बाद। ताबड़तोड़ पारी, आतिशी पारी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक ही रन मिलेगा। डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ शॉट। आशीर स्ट्राइक पर। और आशीर की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर 21 पर खेल रहे हैं 15 गेंदों के बाद, और जो एक सिलसिला था रनों का वो कायम रखा है। और अच्छे शॉट्स भी मार रहे हैं। और एक खराब क्षेत्र रक्षण रवि का, हाथ से रोकनी चाहिए थी गेंद। एक ही रन मिलेगा क्योंकि विमर्शन बहुत ही मुस्तैद फील्डर, ज़बरदस्त क्षेत्र रक्षक, लेकिन यहाँ पर ये रन नहीं देना चाहिए था रवि को। पैर से रोकने का प्रयास, लेकिन गेंद निकल गई। वरुण सिंह स्ट्राइक पर वापस। सिर्फ 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मात्र एक औपचारिकता रह गई है अब इस मैच में, जो संपूर्ण करनी है वरुण सिंह को। और एक बार फिर से स्टंपिंग छोड़ दी और एक रन भी दे दिया है। और रवि चौहान खासे निराश होंगे। विकेट कीपर यहां पर पूरी तरह से चूकते हुए आज 2 बार स्टंपिंग छोड़ दी है वरुण सिंह की।
बढ़िया बल्लेबाजी, तेजी से रन लेने का प्रयास, लेकिन अशीर ने मना किया और सही किया। शायद आउट हो सकते थे वरुण। सिर्फ 16 रनों की दरकार। और अशीर का बढ़िया शॉट, आगे बढ़कर उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी अशीर के बल्ले से भी हो रही है आज, और ये तो बहुत ही बेहतरीन शॉट था। तारीफ करनी होगी यहां पर अशीर की। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ते हैं अशीर और अपने शॉट्स खेलते हैं, और बहुत ही सराहनीय है इनकी बल्लेबाजी, प्रशंसा के लायक। देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछली गेंद थी, क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या बेहतरीन चौका डीप स्क्वायर लेग पर खेला हुआ अशीर के बल्ले से। 131 हो गया है इसको, सिर्फ 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ 11वां ओवर चल रहा है। इस तरह की बल्लेबाजी हुई है, आला दर्जे की बल्लेबाजी। और ये बड़ा शॉट, 6 रन, और ये कैच हो सकते थे यहां पर, लेकिन ये छक्का हो गया। जी हां, बड़ा शॉट था ये। 6 रन के लिए अशीर ने इसे भेज दिया सीमा रेखा के पार। ये देखिए बेहतरीन शॉट, लेकिन यहां पर कैच का मौका था, हाथ से लग कर गई आगे, सीमा रेखा के पार हो गई। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर अशीर के द्वारा। 32 पर आ गए हैं देखिए, सिर्फ 19 गेंदों के बाद, और अब सिर्फ 6 रनों की दरकार। ये मैच 11 ओवर में लगभग खत्म हो गया है, सिर्फ 6 रन चाहिए। तो एक बड़ा शॉट खेलेंगे वरुण सिंह यहां पर, तो मैच समाप्त हो जाएगा। शायद सबसे बेहतरीन चेज है इस पूरे टूर्नामेंट की, इस प्रतियोगिता की, मिसफिट्स ने आज एवेंजर्स के विरुद्ध की है। ध्रुव चौधरी को लाया गया है गेंदबाजी पर। 6 रनों की आवश्यकता और 12.45 का रन रेट। वाह, अद्भुत बल्लेबाजी, वो भी 11 ओवर होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रमण आज झेलना पड़ा है एवेंजर्स को, उनके गेंदबाजों को। मिसफिट्स के बल्लेबाज आज ऐसा लग रहा है कि ये सोच के आए थे कि आज कुछ तूफानी करते हैं, और आज तूफानी कर दिया उन्होंने। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण है। जी हां, इस मैच में पहली बार जबरदस्त क्षेत्ररक्षण हुआ है एवेंजर्स की तरफ से, और विमर्शन ने ये जबरदस्त कार्य किया है। लॉन्ग ऑफ पर चौके को रोका, 1 रन में तब्दील किया, 3 रन बचाए अपने दल के लिए। हालांकि मैच खत्म हो गया है लगभग, लेकिन फिर भी विमर्शन रन छोड़ने को तैयार नहीं, और यही सभी क्षेत्ररक्षकों को करना था। तारीफ करनी होगी यहाँ पर विमर्शन की, क्या ज़बरदस्त तरीके से रोका उन्होंने इस गेंद को। एक बार तो ये रिप्ले देखना बनता है कि बेहतरीन, बहुत बढ़िया। वापस लाइव आ गए हैं। विमर्शन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जिस तरह से उन्होंने इस गेंद को रोका। और ये वाइड गेंद, बच गए यहां पर, स्टंप हो सकते थे। एक रन का इजाफा हुआ, 4 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही कम समय में और कम ओवरों में इस लक्ष्य का पीछा किया है एवेंजर्स के विरुद्ध मिसफिट्स ने। बढ़िया शॉट, एक ही रन लॉन्ग रन की दिशा में। 3 रन चाहिए सिर्फ, लगता है इस ओवर में मैच खत्म हो सकता है ये। जिस तरह के बल्लेबाज है वरुण सिंह, बड़े शॉट से खत्म करना चाहेंगे। एक स्लिप को ले लिया गया है यहाँ पर। हालांकि जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि भारी किनारा लगने का ज़रा सा भी
वहाँ पर मौका होगा, गुंजाइश होगी। तो चौधरी की अगली गेंद, इनकी तीसरी गेंद है, इनका पहला ओवर, शायद इस पारी का आखिरी ओवर भी है ये। और ये बहुत ज़्यादा बाहर, खराब गेंदबाजी, वाइड गेंद। अब सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता इस मैच को अपनी झोली में करने के लिए मिसफिट्स के द्वारा। और क्या बल्लेबाजी हुई है इनकी, जितनी भी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की उतनी कम। खास करके मैं अशीर की तारीफ करना चाहूँगा, 33 रन की बेहतरीन पारी खेली है सिर्फ 20 गेंदों पर। और ये वरुण सिंह चूक गए यहाँ पर, कुछ अलग ही अंदाज में बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर चूके और सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता। और ये बढ़िया शॉट, क्या ये चौका होगा? जी नहीं, एक ही रन है। और 2 के लिए आएंगे क्या? नहीं, नहीं आ रहे। अशीर को दिया है मौका मैच को ख़त्म करने के लिए। अशीर स्ट्राइक पर, 1 रन की आवश्यकता और दोनों ही दलों के स्कोर अब बराबर हो गए हैं। बेहतरीन शॉट और ये मैच की समाप्ति होती हुई। 1 रन लिया यहां पर स्वीपर कवर के क्षेत्र में और ये मैच अपनी झोली में किया है मिसफिट्स ने। अशीर पटेल नाबाद 34 रन पर और वरुण सिंह नाबाद 69 रन पर, सिर्फ 38 गेंदों के बाद। और 34 पर 21 और शायद यहां पर हल्का सा कंफ्यूजन है कि मैच खत्म हो चुका है। जी हां, स्कोरर ने अंपायरों को यहां पर सूचना दी कि लक्ष्य का पीछा हो चुका है। वरुण सिंह की तारीफ करनी होगी और अशीर पटेल की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 34 रन 21 गेंदों पर, सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। वरुण सिंह 69 रन 38 गेंदों पर, बहुत ही बेहतरीन साझेदारी दोनों बल्लेबाजों की। और इस मैच को एक तरफा बनाते हुए जीत लिया है मिसफिट्स ने 9 विकेट से। एवेंजर्स ने अच्छा खेल दिखाया था पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी को वो भुलाना चाहेंगे। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और सभी दर्शकों और श्रोताओं से एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए विदा लेंगे और एक अगले मैच के लिए आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे द सुपर लीग में, TSL में। तब तक के लिए आपका कमेंटेटर शालीन गुप्ता आपसे विदा लेता है। अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि और धन्यवाद।